Honorable members, I am pleased to extend birthday greetings to honorable members of Parliament, Shri Sharad Pawar, and Shri V. Muralidharan. Shri Sharad Pawarji's illustrious political career began in the year 1967, and since then he has been continually in harness with public life. 6 terms member of Maharashtra Legislative Assembly, 7 terms member of Lok Sabha, and now in his 2nd term as member of this august house. On the executive side, he has been 4 times the Chief Minister of Maharashtra and had also been a Union Defense Minister and Minister for Agriculture and Food Processing, Consumer Affairs and Public Distribution. A recipient of the 2nd highest civilian award, Padma Vibhushan, in 2017, and was aptly honored with Outstanding Parliamentarian Award in 2003. His interests go beyond politics, sports being one such area. He had been the president of ICC, BCCI, and Mumbai Cricket Association. Shri Sharad Pawar and his spouse, Srimati Pratibha Pawar, are blessed with daughter, Srimati Supriya Sule, who was a member of this house from 2006 to 2009 and a 3rd term sitting Lok Sabha member now. Honorable members, I am privileged to know all the 3 generations of Shri Sharad Pawar's family and recently met his granddaughter Revati. On my own and your behalf, I wish him a long, healthy and happy life and to be ever in public service. Honorable members, Shri Muralidharan, Minister of State for Parliamentary Affairs and External Affairs, has been a member of this House since April 2018. He exemplifies courteous behavior and instant connectivity. A graduate in English literature, he has always been a committed social political activist. An active leader since his youth, Shri Muralidharan over the years has engaged in activities with societal interest, including as the Director General, Nehru Yuva Kendra 2002 to 2004. During his tenure, he received national praise for creating Rashtriya Sadbhavna Yojana. He is married to Dr. K.S. Jayashree, a Sanskrit scholar. I extend my heartfelt wishes to Shri Muralidharan ji on my own and your behalf and wish him a long, happy life. Papers to be laid on the table. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, with your permission, on behalf of my colleague Shri Rao Inderjit Singh ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 21 in today's revised list of business. Shri Krishnapal. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। Dr. Bhagwat Karad. Honorable Chairman Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name on item number 3 in the revised list of business for today.
Professor S.P. Singh Baghel, महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 2-4 पर उल्लिखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। Dr. Bhagwat Karad, Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. Dr. Bharti Praveen Pawar, Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Shri Shantanu Thakur, Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 2(7) in today's revised list of the business. Thank you, sir. Dr. Munjapara Mahendra Bhai, Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 2 in bracket 08 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. 252, report of the Committee on Subordinate Legislation, Dr. Lakshmikant Vajpayee. महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 252वां प्रतिवेदन अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। 253rd, report of the Committee on Subordinate Legislation, Dr. Lakshmikant Vajpayee. Okay. Dr. Amar Patnaik. Thank you, sir. Sir, I rise to present the 253rd report in English and Hindi of the Committee on Subordinate Legislation on the delay in framing of rules and regulations under various acts by the ministries, departments. Thank you, sir. Report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Satish Chandra Dubey. धन्यवाद महोदय। आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधित अस्थायी समिति का 34वां प्रतिवेदन एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण का सभा पटल पर रखता हूं। Report of the department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Shri Abdul Wahab. Thank you, sir. I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 26th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 7th Lok Sabha, on the subject India and Gulf Cooperation Council, that means GCC, Condos Cooperation, as listed against my name at serial number 11 in today's revised list of business. Thank you. Report of the Committee on Public Undertakings, Dr. Anil Jain. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों की समिति के 21वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। Statements of the department-related Parliamentary Standing Committee on Energy, Dr. Sudhanshu Trivedi. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 2 विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Honorable members, one notice under Rule 267 received from Shri Pramod Tiwari does not merit admittance. Yes. We'll examine. The House may be divided on both the points. Personally, you are full of merit. Sir, matters raised with permission. Shri Samirul Islam need to initiate welfare programs for migrant workers
Respected Chairman, sir, the issue of migrant worker is not new in our country. They have been moving from one state to another for better livelihood for hundreds of years. Over time, migration has increased, which is not new for a developing country like us. In the word of Rabindranath Tagore, বিশাল জনতা চলে নানা পথে নানা দলে দলে যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে in various paths, in various groups, people move from one era to another for the daily needs of humans. Tagore depicted the struggles of the working people in our country, capturing the essence of their struggles. Chairman, sir, we take pride in the Parliament House. Even in the construction of modern building, the sweat and blood of several thousands of workers are intricately woven. However, a broader societal concern arose when the horrifying image of migrant worker came to the forefront during the unprecedented COVID-19 situation. From the railway track to roads, the nation witnessed the plight of these fellow citizens. Sir, not long ago, 41 workers were trapped in the Silkara tunnel that collapsed on November 12 in Uttarakhand. After 17 days, they were rescued. Mostly are migrant workers. Sir, this is the one of the latest example. I can go on with dozens of such plight of the sections of people. As per the latest census data from 2011, there are more than 45 crore integrated migrants, constituting 38% of total populations. By the end of 2023, the number has probably increased by at least 10%. According to this census data, the highest number of migrant workers is in UP and followed by Bihar. This is not true that the most unemployed from West Bengal. Sir, migrants workers from Bengal, when they go to other states, they are commonly identified as Bangladeshi because as they speak in their own mother language, Bengali. But migrants from other states always stay in Bengal peacefully and unharmed. Unfortunately, the nations lack a concrete database of the migrant worker with their details, and there are no specific scheme dedicated to that community. I want to refer to West Bengal, where Chief Minister Mamata Banerjee formed the first such body for the welfare of migrant workers and announced a slew of schemes. Shri Kailash Soni demand to make military training mandatory for secondary school and university students. धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने देश के एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की मुझे अनुमति प्रदान की। मान्यवर, वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहां भाषाओं, खान-पान, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमें इसके साथ ही आजादी के बाद से लगातार हुई घुसपैठ के कारण आसाम में, मणिपुर में, पूर्वांचल में, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट जैसी समस्याएं, साथ ही सारा विश्व एक बाजार है। दुनिया में व्यापार, विचार, अन्य तरह के संव्यवहार के लिए सभी तरह के षड्यंत्रों का प्रवेश भी देश में होता रहता है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आसाम सरकार से घुसपैठ के संबंध में सारी जानकारी मांगी गई। पूर्व में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घुसपैठ पर हुई कार्रवाई के संबंध में निर्देश भी दिए हैं। हमारे पड़ोसी देश विशेषकर पाकिस्तान एवं चीन अस्थिरता पैदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में भी हम छद्म युद्ध का मुकाबला कर रहे हैं। यह बात सही है कि वर्तमान सरकार के 9 वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर बहुत ताकत के साथ कार्रवाई हुई है, फंडिंग रोकी गई है, अनेकों संस्थाओं के पंजीयन रद्द हुए हैं,
एनजीओ के माध्यम से चलने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगी है। अभी भी तरीका बदलकर नए नए ढंग से हमारे दुश्मन प्रयास जारी रखते हैं। इन सब से निपटना एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने, स्कूलों की बड़ी कक्षाओं में एवं महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को सैन्य शिक्षा अनिवार्य किए जाने की हम भारत सरकार से मांग करते हैं। इसमें दूसरा लाभ यह होगा कि हिंदुस्तान का फिजिकल फिटनेस भी बढ़ेगा। आज जिस तरह से बहुतायत हम अपने मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, हर घर में सर्वाइकल, आंखों की बीमारियां और हमारा बहुतायत समय अनुपयोगी कामों के लिए जाता है और बीमारियां सृजित होती हैं। तो एक फिजिकल फिटनेस के लिए, एक स्वस्थ हिंदुस्तान के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए भी मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य रूप से स्कूल की बड़ी कक्षाओं में और महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए सैन्य शिक्षा अनिवार्य की जाए। धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, concern over pro-Khalistani activities on foreign soil. ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का मुझे समय दिया जीरो आवर में। सर, हाल ही में हमने देखा है किस तरीके से खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो एम्बोल्डन हो रहे हैं, वो भी फॉरेन सॉइल पे जाकर, और हमारे देश को धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि हम एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बॉम्ब कर देंगे, पार्लियामेंट में अटैक करेंगे। तो इस तरीके की जो थ्रेट्स आ रहे हैं उस पर हमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर नियंत्रण में लाना जरूरी है। सर, हाल ही में कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस इसी रीजंस की वजह से एस्केलेट हुए थे, जहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं उनको थ्रेट किया जा रहा था, उनके बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे थे फोटोग्राफ्स के साथ कि उनको हार्म किया जाए, उनको हार्म्स वे में लाया जाए। तो ये कहीं भी हमारे, मैं मानती हूँ हमारे पार्लियामेंट के माध्यम से हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना जरूरी है कि ये गतिविधियां हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम हर कार्रवाई करेंगे टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अमेरिका भी हमसे कह रहा है, अमेरिका हमसे कह रहा है कि जांच करें उनके अमेरिकन सिटीजन जो हमारे आतंकवादी हैं उन पे कार्रवाई करने की, हम एमईए के माध्यम से और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से हम उन पे कार्रवाई करें, उनको वापस देश में लाएं और उन पे सख्त से सख्त जो सजा बनती है उनको सजा मिलनी चाहिए। इस आपके माध्यम से यही कहना चाह रही थी सर कि हमें इसको ध्यान देना चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। This is an important issue. I'll discuss with floor leaders so that a voice from this august chamber can go to the entire world. Shri Prakash Chik Braik. रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, मैं आप विषय प्रोविडेंट फंड खातों में आधार के लिंक के कारण चाबागान के श्रमिक, पश्चिम बंगाल के चाबागान श्रमिकों को बहुत सारा समस्या का हो रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रोविडेंट फंड को आधार से जोड़ने वाले अनिवार्य करने के कारण पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों को बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस नीति के कारण कर्मचारियों को पेंशन की असुविधा हो रही है एवं प्रोविडेंट फंड की पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मैं एक चाय श्रमिक हूँ एवं चाय बागान का वर्कर हूँ और ऑलरेडी एक आदिवासी संप्रदाय से आता हूँ। इसके कारण 58 साल के बाद में जो रिटायरमेंट होती है चाय बागानों में, रिटायरमेंट के बाद में हम लोगों को प्रोविडेंट की फंड की पैसा नहीं मिलती है एवं विभिन्न प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के उद्योग से बहुत सारे काम जो चाय श्रमिक एवं ग्रामीण चाय मजदूरों के लिए किया गया, जैसे क्रेश हाउस, हॉस्पिटल की व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि का पट्टा देना से लेके बिना पैसा में राशन, बिना पैसा में स्वास्थ्य एवं विभिन्न प्रकार की परियोजना पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से चाय श्रमिकों को किया गया है। लेकिन आधार लिंक के कारण जो पैसा नहीं मिल रही है एवं इस मिसमैच के कारण जो गरीब चाय श्रमिक है वो पैसा नहीं पा रहे हैं, पेंशन नहीं पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय को अवगत कराना चाहता हूं, इसको जल्द से जल्द ठीक करें एवं पश्चिम बंगाल को जिस तरह से अवहेलना की नीति केंद्र सरकार से किया जाता, विभिन्न प्रकार के सोर्सेस के कारण इसको ठीक किया जाए।
हम लोग चाहे मजदूर एवं प्लॉटिंग करने के कारण महिलाएं जो है उनका अंगुली छिल जाता है, आधार उसको मॉनिटरिंग करने नहीं सकता, मशीन मॉनिटरिंग करने नहीं सकता है। बहुत सारा ग्रामीण इलाका है जहाँ नेटवर्क का समस्या है एवं जहां से उनको उस सुविधा को देखना पड़ता है। अभी जहां तक है आधार के कारण जो समस्या है उसको ठीक करे एवं ऑफलाइन को कंटिन्यू रखे जब तक ऑनलाइन सबमिट नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण एवं गरीब श्रमिकों को इससे असुविधा हो रहा है। राज्य सरकार 100-150 साल से जो हम लोगों का डिमांड था जमीन का पट्टा, राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय ने 10 एवं 11 दिसंबर को अलीपुरद्वार एवं जलपाईगुड़ी में एक चीज पास कर दिया एवं जमीन का पट्टा प्रत्येक 4 श्रमिक को दिया जा रहा है एवं उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए करके दिया जा रहा है, जो श्रेणीय है। भारत में केवल पश्चिम बंगाल में चाय का प्रोडक्शन नहीं होता है, और भी स्टेट पे होता है जहां ये सुविधाएं मजदूरों को नहीं मिलती है। मैं आपके माध्यम से इस मैटर को संशोधन करने के लिए बोलता हूं एवं मंत्रालय को बोलता हूं जल्द से जल्द इस मैटर को ठीक किया जाए एवं चाय श्रमिकों को इसका सुविधा मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भट्टी। धन्यवाद माननीय प्रकाश पारायिक जी। माननीय डॉक्टर अमर पटनायक, डिमांड फॉर सेटिंग अप एन इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कैंपस इन ओडिशा। सर, आई एम स्पीकिंग इन ओडिया सर। प्लीज सर, ओडिशा रे एको इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी रो कैंपस प्रतिष्ठा करिवा पई ये दाबी, उड़ीसा में एक इंडियन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का कैंपस खोलने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट है। सर, भारतीय मैरीटाइम यूनिवर्सिटी अधिनियम 2008 मसीह रे मैरीटाइम यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा करा जायतला। सामुद्रिक अध्ययन, अनुसंधान एवं तालीम को सुगम करिवा पई जातीय स्तर रे एक विश्वविद्यालय आरंभ करिवा पई ए विश्वविद्यालय रो उद्देश्य थिला। सर, भारत वर्ष रे 6टी जगह रे एबे से कैंपस अछि। गोटे हला चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई बंदर, नाभी मुंबई एंड विशाखापट्टनम। ये जो 6टी कैंपस अच्छी सर, से माने बहुत भलो काम करछंती, किंतु सर एबे ओडिसा रो 480 किलोमीटर होची हमर कोस्ट लाइन, आ एई कोस्ट लाइन रे हमर पोर्ट्स अछि, आहुरी 14टी पोर्ट पई मध्य स्थान निरूपण करा जायछि। ओडिसा रो एक समृद्ध सामुद्रिक इतिहास रहिछि। प्राचीन काल रे दक्षिण एशिया रे अनेक देश एहार सहित वाणिज्य संपर्क मध्य थिला। सब भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जेतेबेले जाइथिले बाली, सेतेबेले बाली यात्रा विषय रे मध्य उल्लेख करथिले, आ एई जो परंपरा मध्य उल्लेख करथिले। एहार नौसेना, ओडिसा रो नौसेना रो उन्नति क्षेत्र में मध्य बेस जनाशुना थिला। यह केवल अर्थनैतिक विकास को प्रोत्साहित करि नथला, बरम श्रीलंका, थाईलैंड, ब्रुनेई एपरि बहुत लोक देश संगे वाणिज्य भागीदारी उपरे मध्य सांस्कृतिक प्रभाव पकाइथिला। एक दीर्घ उपकूल प्राकृतिक बंदर रहिबा व्यतीत ओडिशा मध्य प्राकृतिक संपद रे यथेष्ट भरपूर। खनिज पदार्थ परिवहन रे ओडिशा रो एक प्रमुख हब हबार मध्य क्षमता अछि। एहा छडा सर हमरो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अछि, से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रे मध्य एई प्रोग्राम को यदि लिंक कर दिया जाए ताले बहुत लोकन को मध्य ट्रेनिंग दिया जाए कि सेमानक पई चाकरी उपयुक्त व्यवस्था करा जाई पारिबो। सर, जेतेबेले बंदर परिवहन एवं जलपथ केंद्र मंत्री अध्यक्षता अनुष्ठित जातीय सागरमेला एपेक्स कमिटी, नेशनल सागरमेला एपेक्स कमिटी रो तृतीय बैठक रे ओडिशा सरकार भारतर आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास रे सामुद्रिक परिवहन रो महत्व पर आलोकपात करथिले एवं ओडिशा रे गोटे कैंपस खोली पाई मध्य समीक्षा करबा को केंद्र को अनुरोध करथिले। एहा द्वारा केवल जे ओडिशा रो उन्नति हेबो से नुहे, भारत वर्ष रे मध्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संगे बहुत प्रकार रो कोलैबोरेशन करा जाय परिबो, सेमानंक संगे ट्रीटी करा जाय परिबो, गोटे इंटीग्रेटेड कॉरिडोर मध्य करा जाय परिबो। सेति पई सर मु केंद्र सरकार पाखे निवेदन करिबी कि ओडिशा रे गोटिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी रो कैंपस खोला जाऊ। हमर गोटे मैरीटाइम म्यूजियम अछि, कैंपस हेले मध्य एहा आहुरी ताकू अधिक एक्सपेंशन करि परिबो, लोक माने एथिरे बहुत प्रभावित होई परिबे, भारत वर्ष को बहुत सुविधा होई परिबो। धन्यवाद डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय श्री मस्तान राव बीडा, need to support and enhance the horticulture sector in Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you for Honorable Chairman, sir, for giving me opportunity to speak on importance of horticulture in the state of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was among the top states for fruit production during 2021 and 22, producing approximately 1.8 crore metric tons of fruit as per ministry estimates.
The horticulture sector is critical to the state's agriculture landscape and includes diverse array of crops with mango, banana, orange, and papaya leading in production. Horticulture is rapidly growing, with Andhra Pradesh aiming to become a significant horticulture hub, exporting its produce globally. This transition to horticulture provides a climate resilient and higher income alternative for the farmers, contributing to food and nutritional security in the state and country. However, India's share in the global horticulture market remains a mere 1%. The sector faces numerous challenges such as small operational landholdings, irrigation inadequacies, poor soil management, inadequate transportation infrastructure, and fragmented supply chains contributing to delays. The perishable nature of produce and lack of equitable cold storage and warehousing facilities across the states lead to wastage affecting profits. Addressing these issues and taking the required action, such as expanding cold storage facilities, is crucial for unleashing the sector's full potential. I therefore urge the government to support and enhance the horticulture sector in Andhra Pradesh, particularly boosting its contributions to sustainable agriculture and increasing our country's exports in the global market. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity. Thank you, Mani Masthan Rao Bida ji. Mani Shri Niranjan VC ji request to exempt GST for handloom sector. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for giving me an opportunity to raise the matter of an urgent of public importance on to exempt GST for handloom sector. Sir, the fact that GST has been implemented in the textile sector, especially the handloom sector, after its implementation in 2017, which has not produced the desired results. Cotton fiber, yarn, and fabric, which were not taxed, attracted 5% GST, and for fabrics from handmade yarn, it would be 12% for the yarn and 5% for the prepared fabrics. This translates to simply mean that the weaver would now have to pay GST for the yarn they purchase, color dyes they use, print jobs they complete, and a host of other things that involve material of process for the entire process of creating a handloom fabric, in addition to their own fabrics. This will have a declining effect on marketing turnover of handloom products and therefore adversely affect the earning of the weavers engaged in this profession, sir. This had an impact on 43.32 lakh workers and weavers who account for 14% of the total textile production in the country. Even the elementary education level among these workers is very low, which makes it difficult for them to comply with GST through filling of forms, observance of producers and procedure and other formalities, and to seek out help for the professional dealing with GST, who have an attached cost for their services and accordingly would force the weaver to travel to urban areas, adding to their financial misery. The state of Odisha has a rich culture of handloom and textile. To help the handloom weaver with the financial burden caused through GST, the government of Odisha, led by our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik, has enhanced the interest-free loan assistance for the weaver and handloom artisan to rupees 1 lakh under the Bunakar Assistance for Livelihood and Income Augmentation Scheme, Balia scheme, sir. Weavers can avail of working capital as per their requirement to a maximum of rupees 1 lakh from the bank at 0% interest. The Balia scheme is being implemented in Odisha, both in urban and rural areas. Therefore, I believe that exemption of GST from the handloom sector can be a major extension of helping hand to these workers and can further help to preserve the rich culture and tradition of our country. Thus, in order to encourage promotion of handloom products, I urge the government of India through you to exempt GST from handloom products. धन्यवाद माननीय निरंजन VC जी. माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी demand to have uniform pricing of gas cylinder at rupees 500 per cylinder throughout the country.
धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में चुनावी भाषण के दौरान भाजपा द्वारा ये कहा गया कि घरेलू गैस सिलेंडर देने के लिए वादा किया गया है। ये अच्छी बात है और चुनाव माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया था। पूरे देश में गैस सिलेंडर के दाम एक समान होनी चाहिए। देश में 11 से 1200 रुपये प्रति सिलेंडर रसोई गैस मिल रहा है। क्या सरकार 6 से 700 रुपये प्रति सिलेंडर वर्षों से मुनाफा कमा रही है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों को भी 500 रुपये से अधिक दर पर प्रति गैस सिलेंडर देश में नहीं मिल रहा है। रक्षा बंधन के समय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 200 रुपये और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय में 100 रुपये की राहत दी गई, लेकिन अभी भी इस योजना के तहत 600 रुपये से अधिक दर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं रसोई गैस खरीदने के लिए बाध्य है। डोमेस्टिक सिलेंडर 14.2 किलोमीटर दिल्ली में है 903 रुपये और उज्ज्वला बेनिफिशियरी के लिए है 603 रुपये। कोलकाता में है 229 रुपये और उज्ज्वला का है 629 रुपये। मुंबई में है 202 रुपये और उज्ज्वला का है 602 रुपये। चेन्नई में है 918 रुपये और उज्ज्वला बेनिफिशियरी का है 618। मेरी मांग है कि सरकार देश में 500 रुपये की दर पर रसोई गैस सिलेंडर देने की नीति अपनाए, यह हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद माननीय रामनाथ जी। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं अपना नाम यहाँ भेज दें। माननीय प्रमोद जी, आप जानते हैं प्रक्रिया। माननीय उपसभापति माननीय महोदय। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, कंसर्न ओवर इंक्रीज इन केसेज ऑफ इंक्रोचमेंट इन द रिवर बेड एरियाज। जी, माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ऐसे गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश के अंतर्गत नदियों की जो इनकैचमेंट एरिया है उसका निरंतर संकुचन हो रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि नदियां धीरे धीरे सिमटती जा रही हैं और उनका जो फैलाव है वो समाप्त हो रहा है। उससे आए दिन बाढ़ की भी समस्या बनती है और मान्यवर राष्ट्रीय नदियों पर तो थोड़ी चिंता सरकारों की रहती है, लेकिन जो क्षेत्रीय नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हमारे स्थानीय स्तर पर जो बहती हैं, उन नदियों का जो भी इनकैचमेंट एरिया है उन पर आवासीय बस्तियां बनती जा रही, लोग खेती करने का काम कर रहे हैं और नदियां निरंतर सिकुड़ती चली जा रही। वो एक गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। मानवर इसके चलते जो हमारा भूगर्भ जल स्तर है वो निरंतर नीचे जा रहा है और वो सारे देश नहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है। मानवर ये इतना गंभीर विषय अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत सी नदियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं और जो नदियां छोटी छोटी नदियां हैं उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। लोग उसके इनकैचमेंट एरिया में खेती कर रहे हैं, तमाम और कई निर्माण कार्य कर रहे हैं और नदियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो मान्यवर मैं चाहूंगा ऐसे गंभीर विषय की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर प्रभावी कार्रवाई हो। मान्यवर इतना ही नहीं, स्थानीय लेवल पर जो वाटर बॉडीज थी, तालाब इत्यादि थे, पोखर थे, उनका भी अतिक्रमण हो रहा है। वहां पर उनका भराव करके वहां लोग आवासीय बस्तियां बना रहे हैं और उससे हमारा भूगर्भ जल स्तर निरंतर कम होता जा रहा है। तमाम सारे हम प्रयास कर रहे हैं कि रेन वाटर रिचार्जिंग का, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है वैदिक काल से जो हमारी नदियां और हमारे तालाब जो हमारे भूगर्भ जल संरक्षण में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते थे, आज उन पर ही इतना बड़ा संकट छाया हुआ है। अगर इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा संकट उत्पन्न होगा। आने वाले समय में पीने के पानी का भी गंभीर संकट होगा। मानवर इतना ही नहीं, अगर इन स्थानीय नदियों, छोटी छोटी नदियों पर चेक डैम बनाकर हम वहां के भूगर्भ जल स्तर को भी बढ़ा सकते हैं और सिंचाई के संसाधनों को भी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जब नदियां ही नहीं रहेंगी और आज हो ये रहा है, स्थानीय प्रशासन बिल्कुल आंखों में पट्टी बांधकर बैठा रहता है, लोग नदियों का, तालाबों का अतिक्रमण करते रहते हैं और स्थानीय प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता। मेरा आपसे इस गंभीर विषय के ऊपर आपसे आग्रह है कि इसके ओर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, राज्य सरकारों को भी निर्दिष्ट करे
कि उनके अंतर्गत आने वाली जो स्थानीय नदियां हैं उनका संरक्षण किया जाए, उन नदियों को जो विलुप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया जाए। आज हम तमाम सारी सड़कों और योजनाओं के ऊपर लाखों करोड़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन नदियों के संरक्षण के लिए हमारी प्राथमिकता नहीं। केवल कुछ राष्ट्रीय नदियां हैं जिनके संरक्षण की चिंता होती है, लेकिन स्थानीय नदियों के संरक्षण के लिए मैं चाहूंगा एक धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, डिमांड टू प्रोवाइड हाउसेस टू गडिया लोहार्स इन दिल्ली एंड टेक स्टेप्स टू अपलिफ्ट द सोशल स्टेटस ऑफ दिस नॉमेडिक कम्युनिटी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जो कुछ लोग जो गरीब हितैषी होने का स्वांग रचते हैं और कुछ पार्टियां जो गरीबों के कल्याण के नाम पर वोट लेकर सत्ता का आनंद लेती हैं, मेरी बात से उनका असली चेहरा व चरित्र देश की जनता के सामने आ जाएगा। मान्यवर, सन 2001 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री माननीय चौधरी साहब सिंह वर्मा थे। उन्होंने गरीब घुमंतु देशभक्त जाति गाड़िया लोहार के पुनर्वास की योजना बनाई तथा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री अनंत कुमार से रोहिणी के सेक्टर 2 में गाड़िया लोहारों के लिए छोटे फ्लैट बनाने की योजना का शिलान्यास करवाया। मान्यवर, 2 वर्ष के कार्यकाल में ये फ्लैट बनकर तैयार हो गए, जिनका उद्घाटन तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने किया। इन फ्लैटों में केवल एक रिहायशी कमरा और नीचे एक दुकान उनके काम करने के लिए थी, इतना ही उनका निर्माण था और लगभग 35 के लगभग ये फ्लैट थे। मान्यवर, इन लोगों का दुर्भाग्य कहेंगे कि दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी की सरकार आ गई जो 2013 तक चली। इसके बाद दिल्ली में आप पार्टी श्री केजरीवाल जी की सरकार आ गई जो अभी भी सत्तारूढ़ है। मान्यवर, 20 सालों में ये फ्लैट खाली पड़े हैं, 20 सालों से, और ये खंडर होने के कागार पर है, लेकिन गाड़िया लोहार फुटपाथों पर गंदगी के बीच पड़े हैं। मान्यवर, गरीबों के हितैषी होने का स्वांग रचने वाली कांग्रेस और आप पार्टी का इससे बड़ा संवेदनहीनता का कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त विषय पर तुरंत संज्ञान लेकर इन फ्लैटों की मरम्मत करवाकर गाड़िया लोहारों को दिए जाएं और वहां बिजली, पानी, सीवरेज की सुविधाएं दी जाएं। अगर फ्लैट कम पड़ते हो तो इनसे ज्यादा और फ्लैट बनाकर उनको पुनर्वासित किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री ए मोहम्मद अब्दुल्ला, डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूट, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूट फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री टू इंप्रूव कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। प्लीज दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड। नो, प्लीज। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, India suffers from a serious level of unbalanced distribution of food. Something even more worrying is that the country wastes a significant portion, which is approximately 16% of its farm produce, such as fruits and vegetables, due to less availability of cold chain infrastructure. Often we see the practice of farmers destroying their produce instead of selling it at fully low prices. Our Indian food processing sector has a tremendous capacity for growth that can improve socio-economic condition of the rural masses. However, the performance of this sector is lagging substantially when compared to other developing nations. India is ranked first in the production of milk, banana, papaya, mango, ginger, and pulses globally. Sir, however, the overall processing level of the perishable products stands at just 10%, which significantly limits to the processing capacity when compared to other nations such as USA, France, and Thailand. Despite having the advantage of favorable agri-climatic condition, the Indian food processing sector lags compared to global food processing supply chain in terms of overall productivity. Many food processing business operates in the small and medium enterprises sector, which often lacks the resources need to upgrade their facilities and machineries to latest technology. Hence, it faces challenge like wastage and contamination. Considering the present situation, the Union government must take immediate action to improve the cold storage and logistics of farm produce at the village level across the country. I also call upon the Union government to announce a minimum selling price for all farm produce and announce special schemes to build more cold storage centers across the country to benefit both the farmers and to prevent unforeseen
price hike of the agro products, which are badly affecting the common man. Thank you, sir. Thank you, Mani Mohammed Abdullah ji. Mania Srimati Mamta Mohanta request to promote Santhali Sarij in the country. धन्यवाद उपसभापति महोदय, मुझे इस गुरुत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, ओडिशा में सांताल समुदाय की बड़ी आबादी है। सिर्फ ओडिशा में नहीं, भारत देश की काफी राज्यों में इनका आबादी है। संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के मामले में ये सांताल समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। इस समुदाय की भाषा को पहले ही देश की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये समुदाय अपने पहनावा, कपड़ा के लेके भी काफी चर्चा में रहते हैं और ये सांताल समुदाय महिला व्यवहार करने वाली वस्त्रों को सांताली साड़ी, झाल साड़ी, पंछी साड़ी बोलते हैं। ये सांताली साड़ी को हर कोई बहुत पसंद करते हैं और ये साड़ी इस समुदाय की परंपरा सहित जुड़ी है। पूजा पार्वण, शादी ब्याह, विभिन्न कार्यक्रम में ये साड़ी पहनना अनिवार्य है। महोदय, आपको बता दूं कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण समारोह में ये सांताल साड़ी का काफी चर्चा में आया था और ये साड़ी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को भी बहुत पसंद है। वर्तमान समय में ये सांताल साड़ी का संरक्षित और बढ़ावा देने की जरूरत है। इसी में समाज के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान होगा। महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि ओडिशा की संबलपुरी साड़ी को काफी बढ़ावा मिला है। विश्व के विभिन्न देश में संबलपुरी साड़ी लोग का पसंदीदा बन चुका है। ऐसे ही सांताल साड़ी को भी प्रोत्साहन की जरूरत है। महोदय, मैं आपके माध्यम में वस्त्र मंत्रालय को अनुरोध करना चाहूंगी कि इस सांताली साड़ी, झोल साड़ी को संरक्षित और विकास के लिए कदम उठाए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी डिमांड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ कोश्यारी कमिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। माननीय दिग्विजय सिंह नहीं। माननीय श्री जीवीएल नरसिंह राव need to implement urgent measures for revival of RINL Visakhapatnam steel plant. Thank you, Chairman Sir, for the opportunity. So my 0-hour submission is about the need to support and strengthen RINL, popularly known as Visakhapatnam Steel Plant. So this steel plant was established in 80s after years of agitation and sacrifice of lives of 32 people. So the plant came into existence, the plant came into production in 1989, and there has been a demand for preferential allotment of captive iron ore mines. So successive governments have not provided these mines, and as a result, the cost of production of RINL is significantly higher compared to the SAIL or other plants. So for 10 years, Congress came to power in Delhi in 2004 only because they won 34 out of 42 seats from Andhra Pradesh. But despite that, they also had a government in Andhra Pradesh from 2004 to 2014. There was a complete neglect. There was never allotment of iron ore, captive iron ore plants, mines in favor of RINL. On the contrary, they invested over 2,000 crores in a forced wheel plant in Raebareli, several thousand kilometers away, only to placate their Congress president and also the then and present MP from the same constituency. And they also invested at a time when RINL had cash reserves. They invested over 14,500 crores for expansion, which actually put heavy interest burden on RINL. So the story of RINL, Visakhapatnam Steel Plant, is a story of complete neglect and injustice. So in 2021 January, the government has taken a decision for strategic disinvestment, but I'm glad this decision is currently not progressing, it is stalled. So since 2022,
The third blast furnace is not working. The third blast furnace has not been functional due to several issues and problems. So I call upon the government, sir, and also the salaries of executives, pensioners and contract workers are delayed because of financial difficulties. Suppliers are also not being paid. Executive promotions, particularly even the time-bound promotions for executives, have stopped. Therefore, I call upon the government to take urgent measures for revival, sir. In 2000, when RINL was referred to BIFR, the Atal Bihari Vajpayee's government bailed it out by giving 1333 crores. I call upon the present government to take urgent measures for revival, to provide promotions, and to take pro-employee measures. Thank you, Mani GVL Narsingh Rao ji. Mani Shri Anil Prasad Hegde ji, issue of digitization of data on India digital ecosystem on agriculture. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the time. The government is proceeding blindly with the digitalization of agriculture without first putting a legal policy framework in place, sir. Although a draft of the policy paper, India Digital Ecosystem on Agriculture idea, was shared in 2021, inviting feedback, there has been no final draft since. There are also serious concerns if the policy, whenever finalized, will be farmer-friendly, because the committee working on this policy did not have a single farmer representative, sir. This policy vacuum has not stopped the government from signing one-year MOUs in 2021 with 11 companies to develop proofs of concept of AgriStack. 2 years later, there has been no updates about the successes and outcomes of these MOUs and how the government will proceed in this regard, sir. In the interest of transparency and accountability, the government needs to share details about the work done under each MOU. As the government actively promotes digitalization in agriculture, there are questions if this will benefit farmers or further lead to their exploitation. E-Sahamati is being touted as the consent manager to help farmers safeguard who all can access their data. While ensuring such consent is extremely vital and necessary, it is not sufficient to ensure that farmers have full control of their data. What is needed beyond consent for meaningful data protection is participatory governance over data, sir. People and farmers should be able to decide what digital services can do with their data rather than digital services making the decision and then using the fig leaf of consent to coerce people to use their services on unfavorable terms. Just like shareholders can vote in the AGM of a company to decide what the company can or cannot do, or citizens of a country can vote to decide who will govern them, people who use digital services should be able to vote to decide what the service can or cannot do with their data. In conclusion, I request the government, sir, to ensure that all digital infrastructure is governed in a participatory manner. Thank you. धन्यवाद माननीय अनिल हेगड़े जी. Dr. Sonal Man Singh ji, demand to save great dance forms of India. माननीय Sonal Man Singh ji. धन्यवाद उपसभापति जी महोदय. ये एक विषय ऐसा है सर कि this needs attention of the entire country. We speak of the tangible heritage, but we are unable to think of the intangible heritage which has kept our country intact despite so many attacks. Our culture and traditions, civilizational values have remained intact. Especially, sir, I would like to mention the fine arts of dance and music, which are the USP of India in the world. भारतीय परंपरा में श्री भगवान नटराज शिव को बहुत महत्ता दी गई है सर. नया कन्वेंशन सेंटर जो बना है भव्य G20 के लिए और अभी पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर भी 27 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति
लगाई गई है। तो उनको नटराज कहते हैं, न नेताराज, न कविराज, न वैद्यराज, न गीतराज, नटराज। तो इसी में नाट्य में सर सभी विधाएं, सभी विज्ञान, सभी विद्याएं शामिल हैं। और ये नाट्य शास्त्र से निकली हुई जो परंपराएं हैं, जिसने भारत को सुनहरी सूत्र में बांध के रखा है, राइट फ्रॉम त्रिपुरा, मणिपुर, असम, अरुणाचल to Gujarat, Rajasthan, down to Kanyakumari and Kashmir. And this has taken India around the world, sir. तो उसमें यदि यूएसपी में सोलो जो डांस है, एकल नृत्य, जिसको हम तपस्या कहते हैं, कि सर मैं भी उसी में ट्रेन हुई हूँ। 8-8 घंटे हम लोग रियाज करके, सीख के, 2-2.5 घंटे ऑडियंसेस को पूरे देश में, यानी पूरे देश में और 90 देशों में गई हूँ सर, एज ए सोलो डांसर। तो ऑडियंस को पकड़ के रखते हैं। अब वो सारा खत्म हो रहा है सर, ग्रुप कोरियोग्राफीज हो रही हैं, जैसे टीवी में, बॉलीवुड की फिल्म्स में देखते हैं। लेकिन सर ये हमारी यूएसपी है, इसके लिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए खास। 8 शास्त्रीय विधाएं जो हैं, उनमें सोलो डांस, तपस्या की पूरी वो होनी चाहिए, क्या कहें उसको, सीखना होना चाहिए सर। और ये यदि मर जाएगा, ये यदि क्षीण होता जाएगा, if we allow this to die, sir, a huge part of our cultural heritage will also die. मैं इतना ही मांग करती हूँ सरकार से कि 200, 500, 1500 कलाकार तो हैं, लेकिन एक कलाकार की जो तपस्या साधना उसकी कला है सर, इस हमारे हेरिटेज को, हमारी धरोहर को हम मरने ना दें। और मुझे सरकारी इसमें मांग मैं कर रही हूँ कि सरकार हस्तक्षेप करें। और बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। ऑनरेबल श्री वाइको जी request to direct NAFED to take suitable measures for processing the procured copra and to market the coconut oil as Bharat coconut oil. Thank you very much. The union government agency NAFED procured copra coconuts from farmers at rupees 108 per kilogram and keeping a stock of 1 lakh metric tons from Tamil Nadu alone. It comes to only 10% of the total copra production. The remaining 90% of the coconuts are sold in the open market. The copra price in Tamil Nadu has come down from rupees 90 to 85. Taking advantage of the offer for sale through action by NAFED, big companies have formed a syndicate, cartel, and plan to bid at rupees 65 per kg. This way, the cost of copra per kg will further come down to rupees 50, and price of coconut will come down to from rupees 12 to rupees 5 in the market. Once this happens, the coconut farmers will be severely affected and they will be at a heavy loss. To protect against such a move, South India Farmers Association is staging a protest at Jantar Mandar, New Delhi, demanding that the government agency itself should process and market the coconut oil. NAFED is procuring wheat from farmers and selling wheat flour under the name Bharat Atta. They also buy dal and sell under the name Bharat Dal and onion under the name Bharat Onion. Therefore, on behalf of the Indian coconut farmers and their associations, I am urging the government to take efforts to introduce Bharat coconut oil by directing NAFED to get the copra processed and sell to the public. This way, both the farmers and the general public will be benefited, removing the middleman. Thank you very much, sir. Thank you, Honorable Vaiko ji. माननीय श्रीमती सुलता देव जी, demand for increased funds for biodiversity conservation in the Chilka Lake. थैंक यू डेप्यूटी चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी द परमिशन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये उड़ीसा से रिलेट करता है। और देखा जाए तो इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट जो हमारा टूरिज्म का टैगलाइन है उड़ीसा के, ये चिलिका लेक है, जो एशिया का सबसे बड़ा ब्राकिस वाटर लेक है। ये लागून है, चिलिका लागून है। मैं इसके संदर्भ में डाली हूँ। डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट इंडियन साइट टू बी डिक्लेयर एज ए वेटलैंड ऑफ इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन इन
1981, the status of biodiversity in Asia largest brackish water lagoon, चिलिका is under threat. क्योंकि चिलिका अभी देखा जाए तो चिलिका में बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। अभी चिलिका विंटर सीजन चल रहा है, बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड आते हैं वहाँ पर रेस्टिंग के लिए। और चिलिका लेक जो है वो सबसे पसंदीदा जगह है उन लोगों के लिए, उन बर्ड्स के लिए। और देखा जाए तो इरावदी डॉल्फिन भी वहाँ पर है। इन चिलिका लेक को ठीक से रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उसके बायोडाइवर्सिटी संरक्षण करने के लिए ये एक वेटलैंड भी है। सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से 2022-23 में 30.51 करोड़ का वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए दिया गया है। मगर देखा जाए तो ओडिशा की चिलिका के लिए या कोई भी वेटलैंड के लिए एक भी पैसा का प्रावधान नहीं हुआ। ये पता नहीं क्यों, क्योंकि जब हम टूरिज्म के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वेटलैंड को संरक्षण करने के लिए बात करते हैं, तो चिलिका पहले आता है क्योंकि वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागून है। पहले से तो फोनी के टाइम से चिलिका लेक बहुत मुश्किल में था। अब देखा जाए अगर हम लोगों को उतना पैसा नहीं मिलेगा जो संरक्षण के लिए, तो फिर कैसा होगा। ये हम लोग का जो ओडिशा की जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है, सीडीए चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी करके बहुत सारे काम हाथ से खुद ले रहे हैं। मगर मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से निवेदन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये किस तरह से ज्यादा असिस्टेंट दे कि इसको हम लोग संभाल के रख सके, इसका बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण कर सके। और बहुत सारे जो प्रजाति विलुप्त प्राय है जो चिलिका में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, उसको हम सहेज के रख सके। अभी हम बोल रहे थे कि ये बर्ड रेस्टिंग का पॉइंट होता है, जो विदेशागत पक्षी आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो हाईकोर्ट के जो दिया गया है, जो हम लोग का जो वो घेरी है, उन लोगों को वो कैसे करके वो घेरी को डिमोलिश करते हैं, जो प्रॉन घेरी होता है। थैंक यू। धन्यवाद सुलता देव जी, धन्यवाद। माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, डिमांड टू शिफ्ट हेल्थ फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माननीय प्लीज डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, प्लीज यू स्पीक। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दोनों को हृदय से आभार प्रकट करूंगा। इस देश में महिलाओं और बच्चों में खून की कमी के लिए उन्होंने 2018 में अनीमिया मुक्त अभियान चलाया, लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। 15-16 में 6 महीने से 6 साल के बच्चों में 58.6% खून की कमी होती थी, आज 67.1% है। गर्भवती महिलाओं में 50.4% महिलाएं खून की कमी होती थी, आज 52.2% है। किशोर बच्चों में 29.2% किशोर बच्चों में खून की कमी होती थी, आज 31.1% बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। बात करें झा साहब प्लीज। किशोर बालिकाओं में 54.1% खून की कमी होती थी, आज 59.1% खून बच्चों में खून की कमी है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और कश्मीर, जहां ये कमी बहुत अधिक मात्रा में है, शायद दुनिया में सर्वाधिक खून की कमी है। मैं केरल का उदाहरण दूंगा। शुरुआती दौर में इन्होंने खून की कमी में बहुत अच्छा नियंत्रण किया था, लेकिन एक सच्चाई यह है कि उपसभापति महोदय, पिछले 5 सालों में केरल में भी खून की कमी 35% से बढ़कर के 39% हो गई। शैशव काल में 14% से बढ़कर के 27% हो गई और गर्भवती महिलाओं में 22% से बढ़कर के 31% हो गई। अध्यक्ष महोदय, यह विषय मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के सारे प्रयासों के बावजूद आज भी खून की कमी बढ़ती जा रही।
मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, प्रशंसा करूंगा। इमरजेंसी ने बहुत सारे काले इतिहास रचे हैं, एक अनजाने में अच्छा काम हुआ। शिक्षा को राज्य सरकार के विषय से हटा करके समवर्ती सूची में लाने का काम किया गया। मैं इस सदन से आग्रह करूंगा, इस सरकार से आग्रह करूंगा, स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण विषय है। Question hour. Honorable, question hour. Question number 91, Shri A.D. Singh. Should I ask this? Honorable Minister. Question number 92. Acha, oh, I didn't see you. I'm so sorry. A.D. Singh, I'm so sorry. I didn't see you. Supplementary number 1. Shri A.D. Singh. We all know that opening of Indian ports to international cruise lines requires a lot of infrastructure, upgradation and logistic support. You have to develop state-of-art terminal with hassle-free, quick and timely immigration. How many ports are being upgraded to international terminals, and what is the status of the infrastructure development, including the road and rail connectivity? Honorable Minister. माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था और उनका कहना था कि एक भी इंटरनेशनल कॉल हमारे हिंदुस्तान में, भारत में आया नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2022-23 में 60 पोर्ट कॉल आए थे और 2023 में अब तक 29 पोर्ट कॉल और वेसल आए हुए थे। माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि हमने अभी 7 मेजर पोर्ट जो हमारे हैं वहाँ रिन्यूवेशन और नए पोर्ट बनाने की, उसको रिनोवेट करके अच्छी सुविधा देने के लिए हमारे 7 पोर्ट के लिए हमने काम शुरू किया हुआ है और कम से कम 5 पोर्ट का काम कंप्लीट हुआ है और बाकी 2 का काम जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। Second supplementary, Shri A.D. Singh. The government has just launched India's first international cruise vessel, MV Empress, to Sri Lanka. What is the response of the tourists to this cruise vessel, particularly the foreign tourists? What are the future plans for Indian international cruise lines? Since you are opening up Indian shores to foreign international cruise lines, you will be in direct competition with them. How much are we prepared to compete with these lines? Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, हमारी मिनिस्ट्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत इस क्षेत्र में आगे जा रही है। आपने सुना था गंगा विलास, उन्होंने जो पहली जर्नी शुरू की थी, वॉयज शुरू की थी, वो 30 सितंबर 2023 में और अच्छी कम से कम पूरा 1 महीने के ज्यादा भी वो टूर अच्छी तरह चली और कम से कम अभी 4 साल का बुकिंग उसमें आया हुआ है। ये इसी तरह के क्रूज और बनाने का काम हमारी मिनिस्ट्री अभी आगे बढ़ा रही है और जैसा मैंने कहा कि सभी पोर्ट में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सभी एक ही जगह सब सुविधा उन्हें मिले, इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम हमारे मेजर पोर्ट में करते हैं। और आपने तो सुना होगा स्पीकर महोदय कि सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, हमारे जो 7,500 जो किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है, ये पूरी की पूरी हम इस सागरमाला के अंदर डेवलप करने की सोच रहे हैं और काम भी शुरू है। उसमें 8 से 2 प्रोजेक्ट हमने लिए थे और उस कम से कम 200 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। उसमें से जो सदस्य ने जो पूछा, तो उसी मुताबिक जो पुराने हमारे जो पोर्ट्स, छोटे छोटे पोर्ट्स थे या जहाँ जहाँ नए चाहिए वहाँ नए बनवाएंगे और उसको पोर्ट, रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी दे देंगे ताकि सी ट्रांसपोर्ट जो अच्छी तरह से चलेगा, पोल्यूशन कम होगा और क्रूज टूरिज्म उसमें बढ़ेगा। यही मेरा कहना है। Third supplementary, Shri GVL Narasimha Rao. Thank you, Chairman, sir. Sir, about 3 months ago, a Visakhapatnam cruise terminal, international cruise terminal, was inaugurated by Honorable Minister and Minister of State. I'd like to thank the Ministry and Honorable Prime Minister for such a great facility to Visakhapatnam. So my question is,
So far, no domestic or international cruise operations have started. So I'd like to know when would these services begin? Second, why would, as part of that question, what is the role of the state and central governments in introducing these cruise operations from Visakhapatnam? Because the pilot operations have had a huge response. I'd like to know when would proper operations begin? Thank you, sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं धन्यवाद करता हूं। ये भी उस कार्यक्रम में थे। हमने जो विशाखापट्टनम में जो कोर्स शुरू किया हुआ है और हमारा प्रयास है कि हर तरह से हम बाहर देशों में सेमिनार लेते हैं, उन्हें सहभाग लेते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते हैं ताकि इस क्रूज टूरिज्म का प्रसार सभी जगह हो और इंडिया में ज्यादा वेसल आए, क्रूज वेसल आए। और जिस तरह से उन्होंने पूछा कि स्टेट का पोर्ट तो उन्हीं के स्टेट में है, जब भी वो मांगेंगे वो भी यूज करने के लिए हम निश्चित तौर से उनकी मदद करेंगे। और जल्दी से जल्दी जो टूरिज्म बढ़ना है, उसके साथ साथ हमारा क्रूज टूरिज्म भी बढ़ाने के लिए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। सी का टूरिज्म, ये इंटरनेशनल शिप हो या नदी में जो पर्यटन है, वहां भी हमारी कोशिश है। हमारी वाटरवेज है, इंडियन वाटरवेज है, उसमें भी सब जगह हम ये करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। Fourth supplementary, Sri K.C. Venugopal. Tourism is one of the most employable generating sector in the country. And cruise tourism. Yes. Sir, thank you very much for giving me an opportunity. Sir, tourism is one of the most employment generating sector in our country. Of course, cruise tourism is one among the major area of development. Cochin is one of the best place, sought after destination for all of us for this cruise industry. My point is that there are so many stakeholders in this area. One is, of course, shipping ministry. Another is tourism ministry. Definitely, external affairs ministry will also have a role in this thing, and the state government also have the role. But there's lack of coordination because of the lack of coordination among these ministries. Now, which type of enhancement we needed in this area is not happening. Or whether the ministry is planning to have a better coordination on all these ministries to enhance the potentiality of this cruise tourism. Sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि इसलिए जो पोर्ट का हम रिनोवेशन कर रहे हैं, उसको जो क्रूज टूरिज्म की फैसिलिटी दे रहे हैं, इसमें ये भी सब है। सभी जो कस्टम होगा, बाकी सब जो मिनिस्ट्री इसको लगती है, तो वहाँ उसी एक ही जगह पर उनका सब क्लियरेंस हो, इमिग्रेशन हो, सभी इसी से हो जाएगा। और इसी तरह के मैंने बोला कि 7 पोर्ट हमने पहली बार लिए है और आगे बाकी बचे हुए भी जहाँ क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ जब साइट मिलेगा वही भी हम आगे करेंगे। और इसलिए ये सब फैसिलिटी इसी एरिया में हमने की हुई है और निश्चित तौर से विद इन शॉर्ट टाइम में सभी प्रोसेस जो है उनके लिए जो टूरिस्ट के लिए लगता है वो प्रोसेस वहाँ पूरा हो जाएगा। Fifth supplementary, Sri P. Wilson. Sir, Chennai is one of the metropolitan city, and we have a major port, Chennai Port Trust, as well as we have another port in Tuticorin. Sir, is there any idea of developing this cruise tourism in Chennai as well as in Tuticorin? And other minor ports are also there. One, if you come into Chennai by flight, you can see the beauty of Chennai while flying the sea side. So why don't you have this cruise tourism? Thank you, Honorable Minister. Respected Chairman, Chair. Honorable member has pointed out about the Chennai Port cruise tourism facilities. For your information, Chair, we have already started our international cruise liners to operate. This is Cordelia. About 3 months back, I went and I did by flag off. Under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and his vision, ultimately helping all the ministry to take up exemplary initiative. And not only initiative, but also achieve the target.
So that is the power of his personality and vision. So because of his transformative, holistic transformative policies in the country, now the development has grown up and every citizen is getting the benefit of it. To draw the attention of the international cruise liners, as honorable members of this house, they all understand, they have seen the world, and they did the experience of moving in the beautiful cruise. There are three categories: ocean cruise, coastal cruise, and river cruise. And to draw the attention of the international cruise liner, first condition is